see this screen now? Is it visible? Yes. Okay. So motion graphs are another very important topic of kinematics. Because graphical method is sort of a representation of data. It's a type of data representation. So इसमें we study three types of graph: displacement time, velocity time, acceleration time. We've already had an introduction lecture over these graphs. ठीक है? So I hope you guys do have an idea of किस तरह से graphs चलते हैं. So let's look at these three velocity time graphs first of all. So number one, this first one is a constant velocity graph. Why is it constant velocity? Because if you look at the axis, the time axis and the displacement axis, it is generally a displacement time graph. ठीक है? Displacement time graph के ऊपर जो quantity represent हो रही है वो है constant velocity. And why? Because you look at the gradient. The gradient of a displacement time graph is velocity. Okay, so you see, if you see the increase on the x-axis, the increase on the y-axis is directly corresponding to the increase on the x-axis. Okay, so as you move towards the right, you move towards the upward direction of the y-axis as well. For instance, agar to yahan pe, let's say there's 1, there's 2, there's 3. So exactly with the same gaps, there's going to be 1 on the y-axis, 2 and 3. Why? Because इनका जो rate है increase होने का वो same है. ये values same gaps पर होंगी. This is the reason why the gradient is constant. And when the gradient is constant, because you see the gradient in this graph is velocity, we can say that velocity is constant in this case. Okay, guys, is this clear? Yes. Okay, the second one is again a velocity time graph, sorry, displacement time graph with an increasing velocity. Velocity is increasing at a constant rate. Why is that so? Because you see, इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका टाइम एक्सिस इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपकी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. उसकी क्या वजह है? क्योंकि देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं आपने 20 मीटर्स कवर करना है. एक गाड़ी 20 there's just a second, please hold on for a second. Okay, so I was saying, okay, if you have 20 meters of distance to cover, एक गाड़ी वो वही distance, let's say 20 meters का distance cover कर रही है 1 मिनट में, दूसरी 2 मिनट में cover कर रही है. तो जो 2 मिनट, जो 1 मिनट में cover कर रही है, obviously वो ज्यादा velocity के साथ जा रही है. तो इसका मतलब ये है टाइम एक्सेस में वैल्यूज बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए आपके पास. हमने प्रिसिशन पढ़ी है. वैल्यूज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर. So the more closer the values are on the time axis, it will indicate that closer का मतलब ये नहीं है कि values आप shrink कर दो, values cover उतनी जल्दी हो रही हैं. मतलब उस ग्राफ के अंदर values उतनी जल्दी cover होती जा रही हैं, वो curve उतनी उन values को cover कर रहा है उतनी जल्दी. यानी फर्ज करो यहाँ पर अगर ये वाला ग्राफ इस पॉइंट तक आके 10 सेकंड से पहुंचा था, तो शायद ये वाला ग्राफ उसी पॉइंट पे 20 पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि कर्व ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है. ये बात समझ आ रही है? Yes. तो इसी वजह से इट्स नोन एज ए वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. लेकिन इंक्रीज है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है. अच्छा, कांस्टेंट रेट को वी कैन डिस्कस दैट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि उसका रेट पे एक्सेलरेशन बन जाएगा, वो ग्रेडियंट में आ जाएगा जाके. नाउ द थर्ड वन. अब ये एक और इंक्रीजिंग रेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्राफ का कर्व और शार्प हो गया, और तेजी से वेलोसिटी इंक्रीज करे, यानी जो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो भी इंक्रीजिंग रेट है. यानी acceleration is also increasing in that case, and obviously if there is acceleration present in the first place, velocity would definitely be increasing. Yeah, hence displacement is covered at a very faster pace, at a very faster rate, which indicates an increasing velocity. And why an increasing velocity? Because an increasing acceleration is over there.
So yeah, let's just clear everything up now. Now, velocity time graph, the slope equals acceleration. Yani your gradient is acceleration. The y-intercept equals the initial velocity. Y-intercept क्या होता है? जहां से graph आपका start हो रहा है. The point where your graph cuts the y-axis, okay? So that is the initial acceleration. Why? Because you see, this is the y-axis of this graph. इस graph का y-axis, y-intercept ये है. यहाँ का y-intercept ये है. So the y-intercepts, the equal initial velocity, because you see this is where the velocity starts and the straight line represents uniform acceleration. Above, if you look at the first graph, now in the first graph you see velocity has a constant value. So now because velocity has a constant value, मतलब velocity बदल ही नहीं रही, तो velocity अगर नहीं बदल रही तो इसका क्या मतलब होगा? Acceleration की क्या value होगी? Guys, I'm expecting an answer कि what will be the acceleration if let's say the velocity is not changing? 0. Zero, absolutely, because change of velocity तो है ही नहीं, तो rate इसका मतलब है zero होगा. तो इस graph को if you want to let's say translate this graph onto an acceleration time graph, उसका कोई curve होगा ही नहीं, because it will be zero. Now, if you look at the second graph, यहाँ पे velocity is increasing with time. The increase of velocity with time on a as a straight line graph indicates that there is acceleration, but there's constant acceleration. Because the rate of this graph is constant, the gradient of this graph is constant. आप इस point पे gradient लोगे या इस point पे gradient लो या इस point पे gradient लो, value आपकी same आएगी. y over x होता है ना, इसका y लेके इसके x से divide कर दो, या इधर का y इधर के x से divide कर दो, या इधर का y third के x से divide कर दो, your answer will always be the same. Why? Because acceleration is constant, because the gradient in this case is constant. All right. Yes. It's just give me a second. Now, if you look at the third graph again, now this is an increasing slope. Why? Because if you look at the y-axis, the velocity is increasing with time, but at an increasing rate. The curve covers more points on the x-axis if you compare it to the second graph. The reason is again increasing acceleration. Gradient of इसका अगर देखें तो it's an increasing gradient, एक increasing slope है, जिसका मतलब क्या है कि the rate of change of velocity is increasing. An increasing rate of change of velocity indicates that velocity, number one, the presence of acceleration would indicate that the velocity is increasing, but because the curve has an increasing slope, the rate is increasing, which indicates that the acceleration is also increasing. So the velocity is increasing at an increasing rate. I hope this makes sense to you guys. समझ आई बात कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी ऐसे ही बात आई थी, तो हमने कहा था कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर हो रही है तो इसका कम टाइम में हो रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी अब कम टाइम में ज्यादा होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेलरेशन तेज होती जा रही है. कि आप एक ही डिस्टेंस लेट्स से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उसी डिस्टेंस में इफ यू लेट्स से keep on increasing your velocity, so the rate is increasing. If you maybe take your final velocity at a point and then initially you subtract and divide by time, तो your acceleration would be different at every point. हम ये अब अगर इसके gradient को देखो तो अगर let's say ये point ले लेते हैं, point 1, point 2, point 3 and point 4, all of these 4 points will have a different value for the gradient. और हर point पे gradient की value ज़्यादा आएगी पहले से, क्योंकि slope increase कर रहे हैं. Is that clear? Yes. Okay. Moving on, acceleration time graphs. अभी देखो ये सारी इनकी translations. If you guys look at these graphs now, the first one is translated. You see this first displacement time is translated to the velocity time, or velocity time is now translated to the acceleration time graph. अच्छा इसको हम देखते हैं. Let's look at the acceleration time graphs in detail now. Slope is meaningless. यानी acceleration time graph के slope का कोई वो है ही नहीं representation यहाँ पे. You're not concerned with the gradient now. Why? Because कोई value है ही नहीं जो कि acceleration over time से आपको मिले. ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं उसका. Y-intercept equals the initial acceleration. Yani, if you look at the y-intercepts, the point where the graph, the curve cuts the y-axis is the point where your acceleration has an initial value. That is
the initial acceleration, all right? And a zero slope basically represents that an object has zero acceleration, all right? जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है? सॉरी, जीरो एक्सेलरेशन नहीं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जीरो स्लोप का मतलब ये नहीं होता कि लाइन जीरो पर बनी हुई है. Zero slope is any horizontal line, okay? It may have a value, it may not have a value. Do you guys get it? Yeah. If you Yeah. look at the first two graphs, इनमें से first two graphs में दोनों की slope zero है. यानी लेकिन difference क्या है? जो first की slope है, it's on the x-axis. The slope of the second graph has a value of has any value other than zero. So both of these are zero slopes, but the difference here is that the second graph has a zero slope, which also has a value on the y-axis, which indicates that the acceleration is constant. Zero slope का मतलब ये होता है कि जब gradient zero कब होता है? जब line बिल्कुल horizontal हो जाए. And as you start to increase your, you could say, orientation, if you start to change your orientation from the horizontal direction to vertical, so in that case, the acceleration, not the acceleration, sorry, your slope increases and it reaches an infinite value as you make it vertical. So एक vertical slope का gradient infinity होता है और एक horizontal slope का gradient zero होता है. So this is the reason why acceleration has a constant value in the second graph. It has a zero value in the first graph. Zero value का मतलब simple ये है कि वहाँ पे slope ही zero पे बनी हुई है. Zero slope है लेकिन वो है भी zero पर. Second graph में zero slope है लेकिन it has a value for acceleration. ठीक है? So never confuse a zero slope with a zero value of acceleration. Whatever the representation of a graph is on the y-axis, you need to read that. Gradients की zero value और gradients की infinite value का कोई ताल्लुक आपकी graph की reading के साथ नहीं होता. It is different than that, all right? Similarly, area under the graph of an acceleration time graph would represent a change in velocity. क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ आप जरा देखो खुद से. सेकंड ग्राफ में एक रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इन द ब्रेथ हो जाएगा. लेंथ क्या है इसकी? एक्सेलरेशन. ब्रेथ क्या है? टाइम. इफ यू मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन विद टाइम, आपका आंसर से वेलोसिटी बच जाता है. सिंप्लीफिकेशन है फार्मूला की. a इज इक्वल टू v बाय t. a इनटू t क्या बनेगा? वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा ना. तो इसी तरह से in all of the acceleration time graphs, their areas under these curves represent velocity. Because if you multiply acceleration with time and you keep in mind the formula v by t, you're going to be left with velocity. All right? Guys, is it all clear up till now? Yes. Okay. And now looking at the third graph, the third one is an acceleration time graph with an increasing acceleration. Now you see zero se aapki value is constantly increasing. The slope is now constantly positive. The slope, um, so if you look at the values of acceleration, they're increasing. Agar acceleration की value increase हो रही है, so how would the velocity time graph be, guys? I want you to first of all explain how the motion of that object will be, a motion in an object with this kind of graphical representation, and how would its velocity time graph look like? हाँ जी. Velocity increase होगी. वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये तो हमें पता है. किस तरह से इंक्रीज होनी चाहिए? मतलब उसका रेट कांस्टेंट होगा क्या? वो इंक्रीजिंग रेट होगा? Yeah, constant होगा, uniformly increase होगा. यूनिफॉर्मली इंक्रीज क्यों होगा? हमने अच्छा देखो, बताओ कि रेट ऑफ वेलोसिटी क्या चीज होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या वैल्यू होती है? This was travel. सॉरी, बेशक गलत आंसर कर दो, एटलीस्ट स्पीक लाउडर. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या चीज होती है? I couldn't have asked an easier question than this, guys. We're into the third lecture of kinematics. I'm assuming ये तो पता होना चाहिए. दोनों को नहीं आता? Why this? हम्म? Why intercept होगी? अल्लाह माफ करे, y इंटरसेप्ट कैसे हो सकती है? y inter rate of change of velocity is acceleration.
I was literally repeating the definition of acceleration again and again. देखो, v minus u by t, right? v minus u क्या चीज होती है, हसन? Final velocity by the Exactly, final velocity minus initial velocity. और जब आप उसको टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या चीज बन जाती है हुसैन? क्या बन जाता है? acceleration. एक्सेलरेशन बन जाती है. क्यों एक्सेलरेशन बन जाती है? क्योंकि जब आप So, किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो रेट होता है, राइट? वो उसका रेट बन जाता है. यानी अगर इफ आई टेल यू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मे बी योर वेट ओवर टाइम, acceleration. हाँ हाँ, अब एक्सेलरेशन बन जाती सर है. कैन आपकी यू टेल आवाज मी? आवाज नहीं आ रही? कैन यू हियर मी नाउ गाइस? एम आई ऑडिबल टू यू? yes सर अभी आ रही अब सही आ रही है? yes ठीक sir है. तो या yes यू आर राइट कि दैट इज एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन क्यों बन जाती है? क्योंकि वो रेट, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो, पर यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है कि आप उसका रेट निकाल रहे हो, यानी वो चेंज कितने टाइम में जाके हो रहा है. तो फॉर इंस्टेंस, if let's say you look at the changes in your weight maybe over time, कि एक महीने में आपका वेट कितना बदल रहा है, आप उसको, एक मंथ इज टाइम पीरियड, राइट? तो आप जब भी किसी रेट को एनालाइज करते हो, यू लुक एट इट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट टेक्स टू फॉर दैट चेंज टू टेक प्लेस. ओके, so in this case, if you're looking at velocity and we're looking at the changes in velocity with time, so you will obviously be dividing your final and the rate, the change of velocity, the final minus initial, with time. So that is acceleration. तो सवाल तो ये था कि what is rate of change of velocity? That is acceleration. अब जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इस ग्राफ की ट्रांसलेशन वेलोसिटी टाइम में क्या होगी. अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ हैज ए कांस्टेंटली इंक्रीजिंग स्लोप व्हिच इंडिकेट्स कि आपका ग्रेडियंट यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट? अगर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, आपको ये तो पता है कि जी आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है हर पॉइंट पे. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बदल रही है. तो अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी एक इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज करेगी. इज दैट राइट? yes So if let's say you start driving your car and you keep on increasing your speed at every instant until you reach your destination, so it will indicate that number one, your velocity is increasing. नंबर टू, आप उस इंक्रीज को भी इंक्रीज करते जाओ ना. यानी पहले आपने, लेट्स से इफ यू ड्राइविंग एट 10 मीटर पर सेकंड, फिर आप 15 मीटर पर सेकंड पे आ गए हो, फिर आप 5 पे गए, फिर आप 25 पे चले गए हो, फिर आप 40 पे चले गए हो, फिर आप 60 पे चले गए हो, राइट? तो आपका जो, अगर आप इनके गैप्स को एनालाइज करो, पहले आपने 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, फिर आपने 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, फिर आपने 15 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, तो your rate, your gaps were not constant, which indicated that the acceleration was also increasing. Velocity तो बढ़ ही रही थी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन जो रेट था, जिस गैप के साथ, जिस रेशो के साथ इंक्रीज कर रही थी, वो रेशो भी इंक्रीज कर रहा था, जिसका मतलब क्या है कि your acceleration was also changing, it was also increasing. So guys, look at this velocity time graph. This is how it will be. An increasing rate. Curve ऊपर की तरफ increase कर रहा होगा. I hope this is clear. yes sir Okay. अभी भी if you have any questions let me know, because we're going to move on. और इसके जो questions आते हैं एग्जाम में फिर वो फंस जाते हैं, तो इसलिए अभी कोई questions हैं तो let me know. कोई भी चीज जो ना क्लियर हो. नहीं, okay. So सर now ये acceleration time ग्राफ में जो आखिरी आपने ग्राफ कराया उसका फॉर्मूला क्या होगा लाइक जो आखिरी आपने जो अभी वो इसका फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला? अंडर द ग्राफ नहीं निकालना होता वन हाँ बाई जी, टू इसका, बेस हाँ इनटू हाँ, हाइट इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी आपको, और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस आपका टाइम होगा, हाइट आपकी एक्सेलरेशन होगी इसमें. ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप ग्राफ है. अच्छा, now let's look at these graphs generally, how they're translated. You see the first one is a displacement over time graph. Constantly increasing displacement है, यानी increasing slope है, which indicates the velocity is constant, because displacement is increasing with a constant rate. If you look at the velocity time graph, you see it has a constant slope. Why? Because the velocity value is constant. The same velocity value carries on throughout the graph. The time is increasing, but the velocity is not changing. Now, if you look at the same graph, its translation to an acceleration time graph,
there is no acceleration. Why? Because the velocity was constant. The velocity was 0. All right, this was the first column. Now, the second column, you see displacement over time graph has an increasing gradient, has an increasing slope, which indicates that velocity is increasing at a constant rate. Now, with this information that velocity is increasing, and there's an acceleration present because there's a change of velocity naturally. Okay, so that acceleration in this case is constant. Why? Because the increase in this graph is not very sharp as compared to the third one. ये बड़ा slight एक curve है, slight change आ रहा है. इसका मतलब ये acceleration is there, it's constant. So you see how this velocity time graph, a constantly increasing velocity. If it's constant, the gradient is constant, so the acceleration will also be constant. You see how it's a zero slope, it has a value, but a constant one. And the third column is a displacement over time graph with an increasing rate. So the gradient is increasing with an increasing rate, which indicates that the velocity is increasing as well. Velocity time graph also has an increasing slope. Now, since the slope of velocity time graph is also increasing, the acceleration would also be increasing, but at a constant rate. You see the acceleration time graph has a constantly increasing slope. So this is how we got to translate all the displacement time graphs to velocity time graphs, and then those velocity time graphs to the acceleration time graphs. Is it all clear now? बहुत ज़्यादा information तो नहीं होगी आज के लिए. Let's look at this worked example. The velocity time graph of a vehicle traveling with uniform acceleration is shown in the diagram below. Calculate the displacement of the vehicle at 40 seconds. So now you see this is a velocity time graph. You're supposed to find the displacement at 40. A velocity time graph की जो displacement होती है वो area under the graph होता है. All right. So yes. बस अब इसका सिंपल तरीका ये कि एरिया फाइंड करना है. ठीक है, यानी 40 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने. ये है कि स्पीड से चल रही है, 40 सेकंड चली है, बताएं डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा. हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इज 40, हाइट इज आई थिंक 100, which is the 100 kilometers per hour velocity. You multiply these, divide by 2, you'll get the answer. This is the work solution. As simple as that. Okay, now another worked example, gradient of a displacement time graph. अब इसमें ये है कि a car driver sees a hazard ahead and applies the brakes to bring the car to rest. What does the displacement time graph looks like? So you're asked to translate this velocity time graph into a displacement time graph. तो ये देखें इसकी translation कैसे हुई है. पहला, whenever you translate guys, always do it like this. Parallel रखें दोनों को, lines draw करें equal intervals पे. अब देखें, if you look at the first segment till t1, the velocity is constant. एक constant value है. तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी है तो सही ना, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, तो फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा. एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा डिस्प्लेसमेंट का. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट यू सी द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. अब जब वेलोसिटी की स्लोप नीचे की तरफ आ रही है, तो जो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसकी स्लोप इंक्रीजिंग होगी, लेकिन एक ऑपोजिट कर्व होगा. व्हाई? बिकॉज यू सी द डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल बीइंग कवर्ड. आप गाड़ी तेज चलाओ या आहिस्ता चलाओ, डिस्टेंस तो फिर भी कवर होना है ना. बच्चे ये करते हैं कि स्लोप नीचे की तरफ जा रही है, वो देखा तो डिस्टेंस भी नीचे की तरफ जा रहा है. ऐसा कभी होता है कि अगर गाड़ी स्लो चल रही है तो रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है? कभी भी डोंट नेवर कंफ्यूज No. a gradient of velocity time graph with a gradient of displacement time graph. देखो ये डिफरेंट क्वांटिटीज है. ये वेलोसिटी का स्लोप डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि योर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी आर डिक्रीजिंग. आप शायद गाड़ी पहले तेज चला रहे थे, अब आप आहिस्ता चला रहे हो, स्पीड कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रिवर्स में चलना शुरू हो गए. इसका सिर्फ मतलब ये है कि डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन बहुत एक स्लोअर रेट पर हो रहा है. You guys get it? So this is the reason why Yes. the gradient of displacement time graph has to be increasing, but with a decreasing rate. Because rate in this case is what? It is your velocity. Okay? So I hope this is the point that I was trying to make. यहाँ से ये चीज समझना बहुत जरूरी थी. इस तरह के बहुत ग्राफ्स आते हैं. You guys must be clear with how to translate these negative slopes जो कि decreasing gradients होते हैं. You guys may take a screenshot of this. मुझे बताओ कि notes बना रहे हो साथ साथ? Yes sir, बना. बना रहे. इसकी screenshot लेना.
Or and try to draw it down after this lesson on your notebooks as well, because the more you practice, the more you try to make these graphs, it will be easier for you guys to understand these concepts. And let's just keep it till here for today.